अब आपको चाहिए एक मिड साइज एसयूवी एंड यू ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ एडवाइस। टर्बो पेट्रोल ले लो, डीसीटी ले लो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले लो, सीवीटी इजी है, बट आपको चाहिए एक ओल्ड स्कूल एनालॉग ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड दैट यू फाइंड इन दिस द मारुति सुजुकी विक्टोरिस विद a petrol manual powertrain. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. Now, before we move ahead with this video, I have a small request to make of you. If you like the kind of content that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. If you know someone who's looking to buy a mid-size SUV and wants a petrol manual powertrain, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. Now let's start with the design of the Maruti Suzuki Victoris. Mid-size SUV स्पेस में अगर बात करें, आज की डेट में बहुत मॉडर्न कंटेम्पररी डिजाइन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि द Hyundai Creta, the Kia Seltos. All of these cars look properly modern and even futuristic to a certain extent. With the Victoris, that is not the case. And मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी बात है। Victoris का डिजाइन जो है एक स्मूथ flowing design है. Yes, it does have certain lines on it which give it a bit of character, but ultimately overall मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे this is the kind of design that's going to age well. तो 5 साल बाद भी ये गाड़ी आपको इतनी ही अच्छी लगने वाली है जितनी देखने में आज लग रही है, which is not the case with really modern futuristic designs because they do not tend to age well. So I think on that front वो old school experience जो था ना कि गाड़ी एक बार ली and it continues to look nice to you year after year, that is something, a feeling that you will enjoy in the Maruti Suzuki Victoris. अब Victoris के इंटीरियर की यहाँ पे बात करें, I have to say this, I'm impressed with the interior quality, keeping in mind that this is a Maruti Suzuki car. Now Maruti Suzuki के साथ एक ट्रेडिशनल चीज़ रही है कि उनकी सारी गाड़ियों का इंटीरियर ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता था, बहुत सारे पार्ट्स शेयर होते थे, एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे that is not the case. You still see a lot of parts inside the Victoris's cabin that are present from the Maruti Suzuki parts bin, but designers, the engineers at Maruti, they have ensured कि यहाँ पे एक separation भी feel हुए. You've got a multi-layer dashboard here with multiple colors in there. You've got grey, black on the top. You've got this nice beige, white leatherette material right here, and again a black to finish the bottom layer. Now these are hard plastics, but this is a soft touch material. You've also got ambient light running in this area over there, and that is mostly visible at night. उसके साथ ही साथ आपको आपके यहाँ पे डोर हैंडल्स के पास भी ambient light मिलेगी, and थोड़ी ambient light footwell में भी मिलती है. The intensity is not really high, but it does do the job well because it is after all ambient lighting, and रात को चलाते वक्त थोड़ा सा इफेक्ट देती है, अच्छा लगता है. There is this new screen which stands right in the center. अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर if I just press this button on over here, it is a new layout for Maruti, and I quite like how the screen has been done. Graphics are crisp and clear. Icons are quite well laid out यहाँ पे. Touch interface की भी बात करें, it is a nice touch interface and you can place shortcuts on the home screen. तो आपको जो भी फीचर सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, you can easily position them on the home screen over here, and that makes your driving experience a little bit easier. अब बात करें AC controls की, you've got a lot of physical controls here and even a knob to change the volume and mute and unmute the audio system. But AC controls में ना auto का button नहीं है, which is one of the buttons that you use the most. So that is available. What I've simply done to overcome my hurdle of going into the screen and every time is I've placed a shortcut for the climate control on the main screen. अब बस यहाँ से auto दबा देते हैं and AC on हो जाता है. Now another thing that Maruti has done is change the instrument cluster. Now it is a rectangular unit and it is fully digital. And I quite like the direction Maruti is going in with this. The graphics say are not as slick as something like a Volkswagen, but they're definitely up there. It is a different breed of graphics, and what I really love is कि ये graphics जो है ना digitally laid out है, but they have an analog sense to them. Now Maruti allows you to choose between two different types of layouts over here. One is the classic layout, which features dials for the RPM and for the speedo, which does look like a traditional Maruti instrument cluster. And then you've also got a standard version, which is a modern
design. You've got a bar that goes up for your RPM, and you've got your speed written in the middle, and you've got all other things in the instrument cluster laid out in that fashion. I over time preferred the analog version more because that is what this car is all about, and we'll get back to it further in the video. But even the standard version I think is a step up in terms of graphics. काफी सही देखने में फील होता है, and the usability that is also nice. Steering wheel की बात करें थोड़ा similar भी फील होता है, but you've got these new style of buttons over here. You've got this round central horn in the middle. One thing I don't really like is कि लेफ्ट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील पे बहुत सारे बटन्स हैं, राइट साइड पे सिर्फ 3 या 4 बटन है, एंड एवरीथिंग एल्स इज अ ब्लैंक स्विच. आई विश दीज कंट्रोल्स हैड बीन सेग्रीगेटेड बेटर, स्पेशली जब आप नेक्स्ट सॉन्ग या प्रीवियस ट्रैक का बटन दबाने जाते हैं स्टीयरिंग पे. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि देयर आर 2 और 3 डिफरेंट बटन्स व्हिच आर मार्क्ड द सेम वे. एंड सेकंड इज यहाँ पे दीज बटन्स आर पोजीशनड क्वाइट close to the horn over here, and you really have to stretch your finger out for them. अगर ये सेंट्रल होते थोड़ा और बेटर होता, या इस साइड पे भी दिए जा सकते थे, but these are small issues. Seat comfort की बात करें, I really love these seats. These seats fit my size, my frame quite well. However, if you are on the healthier side, you might feel that the seat base है थोड़ा छोटा पड़ रहा है. This side the bolstering is quite good. यहाँ पे इतनी दिक्कत फील नहीं हो रही, but यहाँ पे bolstering बिल्कुल ही measured है, and so with anyone who's bigger, who's larger than me, will probably not be very comfortable in them. These seats also get a ventilated function जो यहाँ सेंटर में बटन से ऑन हो जाता है. You got 3 different adjustments, but I have to say this one thing: the moment you turn this on, there is a fan-like sound. It's a loud sound that you can hear. So seats ठंडी तो कर रही हैं, but there is a lot of noise coming from them. उसके अलावा यहाँ पे अगर साइड डोर पे देखेंगे तो you get to see those traditional Maruti parts के buttons. यहाँ पे there is nothing really much to talk about over here. You've got a head-up display also. I'm not a big fan of this tech, but it is there. If you're someone who likes to use this, you do have it over here. You can adjust it from the side. अब इसी के साथ चलते हैं रेयर सीट में, देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है. अब हम आ चुके हैं सेकंड रो में मारुति सुजुकी विक्टोरियस की, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मल्टी कलर्ड एलिमेंट है इस कैबिन का वो काफी प्रोनाउंस फील होता है. मैं अपने सामने वाली सीट को अगर देखता हूँ, ब्लैक हेडरेस्ट है, बट देन यू गॉट दिस बेज व्हाइट कलर राइट हियर, एंड देन अगेन ब्लैक है. सीट पे भी आपको यहाँ ब्लैक दिखेगा, यहाँ ब्लैक दिखेगा, बट जो साइड्स हैं हेडरेस्ट की, दोज आर फिनिश्ड इन ब्लैक, एंड डोर पे भी एक सिमिलर स्कीम है. तो काफी मल्टी कलर्ड, काफी वाइब्रेंट कैबिन लगता है देखने में ये. अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, आपको ये 2 छोटे से AC वेंट्स मिलते हैं विद एयर फ्लो कंट्रोल ओवर हियर, एंड you've got 2 USB Type-C ports right here. साथ ही साथ एक फीचर है जो आप लोग जानते हैं मेरा फेवरेट फीचर है, which is a sunshade. It is missing on the Victoris. Cabin ambience की यहाँ पे बात करें, कलर्स तो मैंने बता ही दिया, वाइब्रेंट है. You've also got a panoramic sunroof, so it does open up the sense of space जो यहाँ पीछे बैठ के फील होती है. बट मैं ये जरूर कहूँगा, the sunroof it is a bit small for a panoramic sunroof. ये थोड़ी सी और बड़ी होती तो पीछे का जो कैबिन का एम्बियंस है वो और बेटर हो जाता. अब सीटिंग की बात करें, it is an upright seating position. Cushioning is nice. The bolstering is not intrusive. 3 लोग इस पे reasonably well बैठ सकते हैं, although अगर वो थोड़े साइज में बड़े हुए, they will have problems with their shoulder space. Leg space underneath the seat in front quite good. ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से पोजीशनड है. लेग रूम भी मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा है, एंड डिस्पाइट द पैनोरामिक सनरूफ आई हैव अबाउट an inch and a half of headroom. Taller passengers will have a little bit problem here, say 5'9", 5'10", they will end up bumping their head in the roof over here. That can be a problem. Obviously, you also get an armrest over here. साथ में 2 cup holder आपको बीच में मिल जाते हैं, and I think this is a new take from Maruti, but you've got this seat belt. Basically एक normal style seat belt for the middle passenger as well. अब ये ना यहाँ पे थोड़ी जगह लेती है. So if you do not want this belt hanging from the roof all the time, all you gotta do is just click this button over here, and this comes out and just goes back inside the room. So now you have a slightly more clutter-free cabin at the back.
Now a mid-size SUV that's going to be ferrying your family around, you're going to be doing road trips in this, तो एक decent से बड़ा size का boot तो बनता ही है. And the Victoris offers about 439 liters of boot space over here. But that is keeping in mind that there is a parcel tray here. इस particular car में वो parcel tray अभी नहीं है. So you can see that you will have more space on the top, even though it is a slightly larger space only. But अगर emergency है तो आप वहाँ तक सामान पैक कर सकते हैं. But हाँ, you will have to keep in mind कि ऐसे में आपकी rear visibility will be affected. बूट की बात करें, it is quite well finished क्योंकि flat area है, sides में भी, नीचे भी, आगे seats की तरफ भी, and obviously अगर आप चाहें तो आप इन seats को fold कर सकते हैं and you can liberate more space over here. एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, the seats, the rear seats, they don't fold flat and उसकी वजह से obviously चीज़ें इतनी आसानी से तो आप नहीं रख पाएंगे, बट यू स्टिल गेट अ लॉट ऑफ यूजेबल बूट स्पेस ओवर हियर. साथ ही में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इस कवर को हटाएंगे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक spare tire होता, but that is not the case with the Victoris. What you get over here is tools to change your tire and fix it if there is a puncture. मतलब कि इन्फ्लेटर आपको साथ में मिलता है, साथ में जैक मिलता है, सारी चीज़ें जो रेगुलरली मिलती हैं, बट आप अपना टायर फिक्स कर सकते हैं. बट जस्ट इन केस यू हिट अ पॉट होल वेर यू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर टायर और समथिंग लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन में यू विल हैव नो सेकेंड ऑप्शन. आपको गाड़ी टो ही करानी पड़ेगी. यू विल हैव टू गेट अ न्यू टायर पुट onto the wheel and एक spare tire ये सारी problem solve कर सकता था. So I think this is a big miss on the part of Maruti Suzuki to not offer a spare tire with the Victoris. Now one more thing I want to talk about is that you get a 12-volt power socket in the boot. So if you've got something that you want to run, say that tire inflator, or you've got a cooler that you want to run off the car's electrical system, you can do it pretty conveniently using this 12-volt socket over here. साथ ही साथ, and this is a premium touch for a Maruti, you also get a powered tailgate. I mean, it is a novelty feature, but I think it is pretty great. Makes you feel nice about owning the Victoris. What do you think about it? Does such a feature make you feel nice about owning your car? Let me know in the comment section below. Now I'm in the driver's seat of the Victoris. Let me first tell you about the engine. The 1.5 litre naturally aspirated engine makes 103 PS and about 139 Newton meters of torque. साथ ही साथ इस engine में आपको smart hybrid system देखने को मिलता है. Now do not confuse this with the strong hybrid. Smart hybrid basically एक integrated starter generator, एक मोटर होती है जो engine के साथ लग जाती है, and there's a very small battery pack साथ में. तो थोड़ी बहुत ब्रेकिंग जब होती है, जब आप डिसलरेट कर रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं, इट टेक्स दैट एनर्जी एंड स्टोर्स इट इन दैट स्मॉल बैटरी. अब अकेले गाड़ी ये इलेक्ट्रिक पावर पे नहीं चलने वाली है. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिनेरियो, बट व्हाट इट डज डू इज ओवर हियर इन दीज केसेस, जब आप लो इंजन स्पीड्स पे एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, जब इंजन अपनी ऑप्टिमल रेंज में काम नहीं कर रहा होता है, at that point of time the small electric motor and the smart hybrid system, the small battery pack, they send a little bit of electric current to assist the engine. Lower speeds पे जो है engine की fuel efficiency इसकी वजह से थोड़ी सी better हो जाती है and आपको एक constant pace of acceleration मिलती है slower speeds पे. अब आते हैं इस engine के character पे, and I really love how this engine works. अब below 2000 RPM बहुत ज़्यादा नहीं होता है, but as you start reaching 2000 RPM, you start to get a little bit of excitement from this engine. And just like a typical Suzuki engine, यहाँ पे आपको एक strong mid-range देखने को मिलती है. And if I try and rev the car out as well, so it does get shouty. You can hear the engine. It is getting shouty. I'm at about 5000 RPM. Now, the top end, it is there, but recent emission norms have kind of dulled down the top end of cars like this. So it's not the most exciting top end, say like a Honda, but it does do the job. It does get you excited. And honestly, अगर everyday driving conditions की बात कर रहे हैं, so you want a strong mid-range, which this engine does offer. Now, I also want to talk about the transmission, and that is one of the reasons why I'm actually driving this car. I love the 5-speed manual that Maruti has on offer. Now, first of all, this gear lever just falls to hand so easily. The gates for the transmission, they are so well defined. It almost feels like operating
a rifle with a sliding mechanism, you know, that kind of mechanical feel that you get in an apparatus like that, that is something you're getting in the 5-speed manual transmission over here. उसके साथ ही मैं कहूँगा क्लच का ऑपरेशन इज वेरी वेरी स्मूथ. क्लच का मोस्टली सारा काम है वो उसकी इनिशियल ट्रैवल जोन में ही हो जाता है. सो फॉर मोस्ट पार्ट यू डोंट एक्चुअली हैव टू प्रेस द क्लच द एंटायर वे. इट सेव्स ऑन फटीग एंड ट्रैफिक में भी ये काफी इजी रहता है. एंड साथ ही में ना इफ यू आर एन एंथुसियास्ट एंड यू समवन हु लाइक्स टू rev match while downshifting, or you know, heel and toe and then rev match while downshifting at that point of time, you're someone who's really going to like this powertrain setup. It's not the most exciting in terms of outright performance, but जब engagement की बात होती है, you feel everything that is happening underneath you, and that brings a sense of satisfaction to your driving experience. Fuel efficiency की बात कर लेते हैं. अगर आप इस engine को एक आराम से mid range में ही चलाएंगे, if you're going to be shifting gears up around 2000 RPM mark, you will very easily get 15 kmpl from this engine. अगर आप इसको बहुत ही आराम से चलाएंगे, आप इस एफिशिएंसी को करीब 17-18 तक भी पुश कर पाएंगे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंबाइंड ड्राइविंग साइकिल ओवर हियर. बट द गुड थिंग इज, अब अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विक्टोरियस की बात करें, it will beat this car in terms of efficiency any single day, but it won't be as fun to drive. And honestly, जब आपको efficiency चाहिए होगी तब आप आराम से चलाएं, and this car will give you efficiency. But if you start driving this car quick, if you start revving all the way to the red line, I think the good news comes there, because वहां पर जो है फ्यूल एफिशिएंसी ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं होती है. टर्बो पेट्रोल इंजन्स वगैरह जो होते हैं, अगर आप उनको बहुत तेज चलाना चालू कर दे, इफ यू स्टार्ट कैरिंग अ लॉट ऑफ engine speed, basically you will see some cars with a 1 liter turbo petrol engine dropping their fuel efficiency down to 5 and 6 kmpl. Now that's not something that happens with the 1.5 liter naturally aspirated petrol engine of the Victoris. You will if you start driving this car quick, you will end up getting an efficiency about 10 or even 9, but that is pretty much the worst you're going to do with this car. So I think on that front you will be able to have your cake and eat it too. मतलब कि आप performance enjoy भी कर पाएंगे, and you will not end up paying a heavy price for it, which is quite important in today's scenario when fuel prices have been rising and there's an uncertainty to when they will stabilize and things like that. So I think ऐसे समय पे ये एक character है इस engine का जो इसको एक और strong point बना देता है, which makes it a reason why you should choose this powertrain over others. अब एक बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी के बारे में भी. I have always loved how Maruti sets up their car, and the Victoris is no different. जो छोटे मोटे undulations होते हैं ना रोड के, they are taken care of very very easily. मतलब कि जो सस्पेंशन की इनिशियल राइड क्वालिटी है काफ़ी सॉफ्ट है. It takes pretty much everything that you can throw at it in its stride. छोटे वाले undulations जो हैं, गाड़ी unsettled फील नहीं होती, काफ़ी comfortable फील होता है कैबिन. अगर बहुत ही बड़े बम की बात करें, वहां पे यू डू फील दैट द सस्पेंशन काइंड्स ऑफ रन्स आउट ऑफ इट्स लिमिट्स, एंड वहां पे आपको वो थर्ड वाली साउंड सुनाई दे सकती है विच टेल्स यू दैट यू काइंड ऑफ रन आउट ऑफ ट्रैवल इन योर सस्पेंशन. कॉर्नर्स के बीच में बात करूं, क्योंकि वो इनिशियल सॉफ्टनेस है सस्पेंशन में टू बी एबल टू iron out the undulations, the small undulations on the road, तो there is a sense of body roll, but क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे पार्ट में है और सस्पेंशन के, it's not happening throughout the suspension movement. It is very well controlled, quite progressive, and very very easy to predict. So if you work your way around this car, this can be a fun car in the corners, but it will ask you to be a little bit precise with your inputs. Just chucking the steering in won't work. You will have to work with it. Now it's time for me to sum up my opinion about the Maruti Suzuki Victoris, and 2 मिनट के लिए इस गाड़ी के प्राइस को भी यहाँ बीच में ले आते हैं. For this variant that you see standing next to me, you're going to pay 15.58 lakh rupees. That is egg showroom. अब यहाँ पे this is the top of the line when you consider the fact कि आपको panoramic sunroof भी मिल रहा है, and you've also got a dual tone paint option. That means the roof is blacked out. नीचे आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है. अब इसकी कंपेटिटर्स से अगर इसको बात करें तो सिमिलर पावर ट्रेन के साथ दोज कार्स आर अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, बट वहाँ पे जो फीचर एक्सपीरियंस है, जो मॉडर्नाइजेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा है. बट
I have to say this, at this price, the amount of modern features you're getting in this car, they feel apt for everyday driving. If you're not someone who wants the car to feel like a smartphone, हर modern चीज उसमें होनी चाहिए, then the Victoris will very much appeal to you. Although if you're someone who wants the very latest feature in your car, then the Victoris will end up disappointing you a little bit. But ultimately, I have to say this, what sells the experience of this, the Victoris with the petrol engine and a manual transmission, is the fact that the driving experience in this car is next to none. It's not an outrightly powerful driving experience. That means you don't really have loads and loads of performance on offer, but the amount there is and the way it is delivered along with the act of engaging with that manual transmission, I think for that, the Victoris does a real good job. Now, what do you think? Do old school cars with an analog driving experience still fit in today's Indian car market? Do you think there are people still who want to buy this car, who want that kind of experience when they're owning a car for say 3, 4, 5 years? I'd love to know what you think about it in the comment section below. Thank you so much for watching, and until the next one, goodbye.